Hello guys, hi, welcome back to the channel. So today we are going to be starting a new project. You can say that this is a very long and a scary project, scary in terms of it's pretty long and complex. So we are going to be starting a new project in the RE framework, Robotic Enterprise Framework, that is of type WI2 items. यहाँ पे हमें WI3 item ये मैंने प्रोजेक्ट पहले भी किया है like we have to sorry that is a WI3 items, right? We are doing the project of WI3 item, that is the work items 3. It is in the Acme system 1 site. Okay, and we are doing the WI3 items project over. Let's read the PDD of this project pretty quick. Okay, so इस पे हमें क्या करना है, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ उसका. You guys can download it from the Acme system 1 as well. ठीक है. Yeah. So we have to log in. मैं आपको यहाँ बताता हूँ देख के. Okay. We have to log in into the site. This is the as is process. ठीक है. ये हमारा as is process है. ये हम लोगों ने यहाँ पे साइट पे लॉग इन किया with the same credentials. Okay. And we access the work items. Here we'll be only processing the WI3. So we'll be using a dispatcher and a performer model. Process in vendor invoice. Sorry. So we'll be searching this part. And यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें डाउनलोड करनी है इस इनवॉइस को. ठीक है. We'll be devising a logic, complex logic out how we can download this file over here as well. अब see, I have to procure the invoice now. Everything I have to procure from this part. ये मुझे PDF से हर चीज डेटा यहाँ पे extract करना है. So it's a PDF, so we can use doc understanding or we can use get text activities or some PDF activity as well to extract the data from the PDF, right? ठीक है. अब यहाँ पे अगर मेरे पास tax ID रहता है, if we have tax ID present in the PDF, right? So it's good. We just copy it and we will be going to home. Okay, and we will going to invoices, and we will be going, sorry, we will be going to vendor, and we'll be going to search for vendor over here, and we'll be only searching the vendor with the help of its tax ID. ठीक है. we'll search. ये मुझे यहाँ मिल गया. ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिल गया. So we'll have to add the invoice. We again go to home. दिस इज द पॉसिबिलिटी जब हमारे पास क्या है, यहाँ पे टैक्स आईडी अवेलेबल है. अगर टैक्स आईडी अवेलेबल है देन ओनली विल बी डूइंग इट, राइट? ठीक है, एंड विल बी गोइंग टू इनवॉइसेस, विल बी गोइंग टू ऐड इनवॉइस डिटेल्स, राइट? सो विल बी putting all this value from here to here. Add invoice details again, we'll press over here. ठीक है, and then we will go to the work items. The same work items will be accessing. Okay, and यहाँ पे था, so we'll be going here and we'll be updating the work item with completed. Okay, and we have to write also something over here, right? Yeah. Status to completed and comment added invoice this part to system, and then we have to continue with the next part. For example, we couldn't find the tax ID. Like let's process this part. Because see, we are only dealing with WI3 items, right? For example, in this part, oh sorry, let's open it in a separate tab. Yeah. So in you can say that in this part we didn't find the tax ID. Right? हमें क्या है, हमें टैक्स आईडी यहाँ पे नहीं लिखी है कहीं पे भी. टैक्स आईडी कैसे पता चलेगा लिखी है नहीं लिखी है? सो इट्स लाइक दैट. टैक्स आईडी यहाँ पे अवेलेबल है इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में टैक्स आईडी अवेलेबल नहीं है. ठीक है. अगर यहाँ पे टैक्स आईडी अवेलेबल नहीं है, so what we'll be doing, we will be, see, search for the vendor specified in the invoice based on its tax ID. If the vendor tax ID is missing from the invoice, reject the activity. We have to reject that specific activity. Now, how to reject? It's saying that C step 1.5 F hyphen no underscore 3. So we have to set this part. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेल करेंगे इनको, राइट? वी विल बी मेलिंग देम कि
please add vendor and attach the invoice. We have to attach the invoice as well. And यहाँ पे हम लिखेंगे update work items में again यहाँ पे we'll be clicking update and we'll be writing oops, uh, vendor with tax ID. Tax ID में क्या होगा यहाँ पे invoice number not present in the system. ठीक है? And email sent to VDD, right? And we'll be continuing with the next part. ये हमारे detail process आ गए. ठीक है? Got it? So guys, this is the as is process of the workflow. आपको लग रहा है कि ये simple है, but it's pretty long and pretty complex as well, scarier complex, right? ठीक है. So let's get started. Okay. So we'll obviously be doing it with the help of a dispatcher and a performer model. इसको हम open रखते हैं जिसके हम कहीं भूल जाएं तो we can refer. ठीक है. तो let's get started. Let's open UiPath and let's open the RE framework. Give it a name. You can say REF, Robotic Enterprise Framework. You can say Research, oops, Check, Dispatcher, right? So I can say Research, Check, Dispatcher. Dispatcher it is, right? Let's create it. So what we have to do at first, we have to log in inside of this website. Now see here our reusable library comes into play. तो मैंने आपको बताया था last video में that how we can make a reusable library in UiPath and use it in some complex projects. So here we can do it by this way. ठीक है? Right? So यहाँ पे हम लोग dispatcher का वीडियो एक में सिंगल वीडियो बना रहा हूँ dispatcher का. It's not that complex. Okay. Excuse me. Okay. So we will be using the extract data table, right? And in the process transaction we'll be adding it to the queue. हम queue लेंगे in the performer, right? So let's do one thing, because हमारा जो transaction data है it will be of data row. Why data row? Because we are using the data table as the transaction item. ठीक है? So let's go here, transaction item, let's change it to data row. Okay, so I can say data row. यहाँ पे data row आ जाएगा. System dot data row is the path of the data row variable. ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे you will be finding to exclamation. I have told you many times this thing that ये कैसे हम change करते हैं. Let's see it again. ठीक है? Get transaction data में अगर आप जाओगे, so यहाँ पे I have to change the, I have to just make a refresh of it. इसको हम refresh करेंगे, right? And I'll again write nothing. Okay, and this error has been diminished. Okay, here in the invoke get transaction data workflow also I can use, because see we don't need this part, हमें ये part नहीं चाहिए. ठीक है, इसको हम हटाते हैं, don't worry, but we will be changing the transaction item to data row. Okay, because we dealing with the data table, right? Okay, our transaction item. Okay, right, save it. And this is showing an error. Queue item cannot be converted to data row. Okay, no worries. So what we can do, we can just, oops, just delete this part, right? Because we are not using in a queue, any queue in this part, right? Import arguments also we have to check. So out transaction item, we have to go with the transaction item as well. Okay, save it and another refresh. Uh, Nothing. Enter. So this was it for the transaction part, get transaction part. Okay, let's go here and change to the process part also. Okay, so we'll have to use data row.
Let's quickly change all this before moving ahead. Main import documents. So I can go with the transaction item that is of type data row as well now. So what we are doing, we are just changing our RE framework to work with data tables. Okay. We are not using any queue here. We are adding the data into queue, but not using any queue to procure the data. And if you're not using any queue to procure the data, we don't need any status also. So we are just putting nothing inside of that part, right? Why nothing? Because see, आगे जाके इसके अंदर मैकेनिज्म है जो अगर यहाँ पे nothing होगा तो automatically it won't be accessing any part of it. Cool. Okay. Handle system exceptions. Let's go here and import arguments. Let's go and quickly change it to nothing as well. ठीक है? Okay. So press main again, and now there are no errors in our project. ठीक है? पहले मुझे क्या करना है? First I have to log in the website. Okay, let's install a dependency, and I can say that acme underscore demo login. Okay, login system one. This thing, let's install it. अभी latest बनाई थी library मैंने. I have actually two libraries. So we don't need system 3, we need only system 1 here. So init में मुझे पूरा का पूरा workflow दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. I can directly use a reusable library in here. यहाँ पे मैं जाके इसको reuse कर सकता हूँ. Init all applications. So I will be using it like acme login. ये part यहाँ आ जाएगा automatically. ठीक है? So let's save it and main, because see मुझे मैंने क्या किया इसको कभी क्लोज होने से रोका हुआ था. Close property was set to never and open property was set to default. Got it. यहाँ एक thing एक और manage package की dependency थी. Something was updating because see we always update our packages, right? Update करना is a good practice. So now let's go to the get transaction state directly. हमारा इतना time बच गया because we used a reusable library, right? Okay, ठीक है. So get transaction state invoke get transaction open workflow. Okay. So हमें क्या करना है? हमें एक workflow यहाँ पे devise करना है. Let's quickly you know do this as well. And yeah, let's have to change this part as well. Data, you can go with config.xlsx, and here in the constant parts we have to see but it अगर हम orchestrator use करते हैं तो उसका inbuilt auto retry mechanism होता है, right? It will be auto retrying the orchestrator, right? Must be 0 if working with orchestrator. If greater than 0, the robot will retry the same transaction which failed with a system exception. Must be an integer value. We are not using any queues, so let's quickly change it to 1. ठीक है? Save it. इसको हम use करेंगे अभी settings. We are not using any this part, so let's delete it and let's go over here and change it to ref research check dispatcher. We are what we are dispatching the process to queue. ठीक है? ये मेरा log of business process name हो गया है. Let's save it. ठीक है? Now यहाँ पे हमें एक logic device करना है, right? Let's use an if activity. This you must be knowing, अभी काफी मैंने आपको बता दिया है बहुत बार. जब मेरा क्या है, जब मेरा ट्रांजेक्शन नंबर 1 होगा, मींस मेरा प्रोसेस क्या है, फर्स्ट टाइम चल रहा है, right? If my transaction number is 1, means it is the first run of my this part of my project. तो अब हम क्या करेंगे, we'll have to
लाइक नेविगेट टू द वर्क आइटम्स, ठीक है, नेविगेट जाएंगे वर्क आइटम्स पे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो फॉर दिस। सी, अब हम क्या करेंगे, वी आर हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग स्मॉल वर्कफ्लो, उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन विल बी इंटीग्रेटिंग इट इनटू अ बिगर प्रोजेक्ट्स। दिस इज हाउ इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज आरई फ्रेमवर्क। अगर आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करोगे फिर उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल दोगे विदाउट टेस्टिंग इट, यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम अहेड। जाके जाके अगर कोई एरर आ गया, सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू रेक्टिफाई दैट एरर एंड मिटिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट एरर एज वेल, ठीक है। एक्मे आई कैन से, बिकॉज हम सिस्टम वन ही यूज कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट राइट सिस्टम वन। लेट्स राइट नेविगेट टू work item. The dispatcher will be the same. So if you have seen my previous videos, the dispatcher is same. बस हम लोग ने WI1 WI3 items use कर रहे हैं in terms of in place of WI5 और WI1 जो भी हमने अभी तक किए हैं उसके place में, ठीक है। Navigate to work items. So what we have to do, we have to first access the application. We will be accessing the application. Okay. हम लोग यहाँ पे हैं वैसे भी home. Okay. We have to, sorry, we have to access the application first. This is the application. Why we are using from here, because we have already used the reusable library जिसने ये पेज मुझे खोल के दे दिया है। इसके बाद मुझे यहाँ से पिकअप करना है, ठीक है। क्लिक टू सेलेक्ट ब्राउजर। ओके, जब भी आप यूज एप्लीकेशन ब्राउजर यूज करो, अगर वो पहले खुल चुका है, सो डोंट यूज ऑलवेज, जस्ट यूज नेवर एंड ओपन ऑल्सो नेवर, बिकॉज मुझे इसको बंद भी नहीं करना है, मुझे इसे खोलना भी नहीं है, ठीक है। ओके, so now let's use dynamic part. इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। Let's use this. In front of this we're using a wildcard asterisk, ठीक है। Now we'll have to go to sorry, we'll have to use an activity called go to URL, ठीक है। ये modern activity है, so we'll have to provide a URL and that specific URL will be of type work items, ठीक है। work items का URL है, so इसको हम copy करेंगे, we'll be going copying it and we will be pasting it, sorry, we will be pasting it over here like this. This is the work items general URL, right, which will be helping in to extract the data out of the table, ठीक है। जब ये work items की URL में जाओगे तभी तो आप टेबल एक्सट्रैक्ट करोगे ना, खुद सोचो, इट्स वेरी सिंपल गाइस। ओके, थिंक योरसेल्फ, जब आप यहाँ जाएंगे तभी तो हम टेबल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये मैं छोटे छोटे एटॉमिक वर्कफ्लोज बना रहा हूँ, फिर नॉट what to say, integrating all that logic into one workflow. It will be more easier to integrate and scale and work with those workflows in the project, ठीक है। Let's test it also, obviously we'll be testing it and we'll be using some arguments here as well, क्योंकि उसको हम config में जाके we can call that key and we can get that value from the config part. Okay, let's try to run this test activity, continue. So it's running now and successfully opened the work items. Okay, and let's, because see why we are testing it again and again, because see हम लोगों ने यहाँ पे डायनामिक सेलेक्टर यूज किया है, सॉरी डायनामिक पाथ यूज किया है। सो आई वांट टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मैं अकाउंट्स में चेक्स में जाता हूँ, सर्च फॉर चेक, मैं कहीं से भी अपने वर्क आइटम्स में जा सकता हूँ, क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन, लेट्स डीबग इट। ओके, इट इज वर्किंग, ओके कूल, इट इज वर्किंग, ठीक है। So we tried two times and it is working because we used a dynamic. अगर यहाँ मैं home लिख देता and मैं यहाँ से करता फिर से कहीं और पार्ट से करता without home, तो it won't be coming to here, वो selector not found error दे देता, ठीक है। Okay, because see whenever you are using a container activities, you are generating a partial selector, right? आप यहाँ पे जाके देखोगे, uh, so it's type of partial selector, okay, and we have done it, no, ठीक है। So we can use two, we can create two arguments and the argument name will be in underscore, I can say acme common URL, or I can say acme dash
common URL. Okay, ये मेरा in part होगा, and I can again create an acme underscore navigate to work items URL. Cool. We are doing this. ठीक है, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा in underscore navigate to work items, and I will be in underscore common URL. ठीक है, ये दो पार्ट हो गए. Let's save it. ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, इन आर्गुमेंट्स है. ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया है. एंड इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं. सेव इट with the name of acme. I can say acme a dash common URL, and the common URL of the dashboard is this part with the asterisk, right? We are not going to be using the home क्योंकि हमें common रखना है उसको. Got it? So we'll be using a asterisk over here. ठीक है, इसको मैं नाम भी देता हूँ acme, and ये जो URL ये hyperlink आ रहा है will be removed. Dashboard common URL, right? Let's remove this hyperlink. It's a good practice. ठीक है, save it. And यहाँ पे मैं लिख दूंगा acme navigate to work items URL. So let's navigate to work items, and जो मेरे it will be a common URL for all of the work items. ठीक है, let's use this acme. I can say work items URL. ठीक है, let's save it. And okay, and let's अब हम यहाँ पहुंच गए हैं. ठीक है, we are here. Now we have to extract the table obviously. ठीक है, so we'll be starting the table. For that, let's create another sequence. Acme, I can say underscore, I can say extract table. ठीक है, Acme extract table. Let's create it. So we'll be using the table extraction wizard for extracting the table. ठीक है, these are all the new work items. I have just reset my test data as well. Select data to extract, click anywhere, because obviously we have to procure all the data from the columns and then filter it later. So extract all the columns from the table, yes. And we have data from multiple pages as well, yes we have. So let's use this part as well. यहाँ पे there is a catch. मैं आपको बताता हूँ क्या catch है. Because see, यहाँ पे ना we are using a fuzzy selector and computer vision and all. Next time it will, if it will be running on some other test data, so यहाँ पे 10 pages नहीं हो सकते हैं, 14 15 20 100 कितने ही pages हो सकते हैं, right? So what we are doing, we'll be using an anchor. We'll be using an anchor because see, ये इस side में I think there's an issue or something, but it can't be recognizing this, this forward part. ये forward वाला है ना यहाँ पे, ये tag, sorry, this button over there, वो क्या करता है, जैसे ही 10 पे पहुंचेगा it will be start clicking over there on the this reverse part, तो वापस जाता है, तो वो ऑटोमेटिक लूप में ही चलता रहता है. इट वोंट बी एंडिंग एवर, राइट? Excuse me. So what we are doing, we'll be using an anchor, and the anchor will be this part. We will be have to make it dynamic as well. ये मेरा टारगेट है, ठीक है, एंड एंकर विल बी दिस पार्ट. सी एंकर नेम यहाँ लिखा है 10. ठीक है, लेट्स मेक इट टू एनीथिंग. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एंड लेट्स डू वन थिंग. सी computer vision, for the selector we are using, we will not be using the computer vision क्योंकि computer vision में यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो we will not be using this part as well. ठीक है, anchor is this, and the target is arrow button computer vision. So we'll be using only the fuzzy selector here
ठीक है, विल नॉट बी यूजिंग द इमेज एज वेल, क्योंकि इमेज में 10 लिखा है, राइट? कंप्यूटर विजन यहाँ पे 10 लिखा है, विल नॉट यूजिंग दिस पार्ट, विल बी ओनली यूजिंग द फॉर द सेलेक्टर ओनली फॉर दिस पार्ट, ठीक है? एंड अगर उसमें दिक्कत आती, वी कैन यूज द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, लेट्स टेस्ट इट। ओके, कंफर्म, सेव एंड क्लोज। Okay, so what we did, we just created a table out of the table extraction wizard, and हमने यहाँ पे इसको, हम यहाँ पे we can just convert it to a argument, and the argument will be of type, I think you guys know the answer, out, because we're throwing something out of the uh, data table, right? Save it. ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगेन वर्क आइटम्स का यूआरएल आ जाएगा, because we are not keeping anything in the this part. यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वर्क आइटम्स, राइट? नेविगेट टू वर्क आइटम्स यूआरएल, ओके। Navigate to work items URL, and navigate to work items URL, and sorry, this is of type, this is of type in, it is, pulling some data in, and it is pulling some, pushing some data out of it, ठीक है? Save, ठीक है, ये भी हो गया है, हम डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, लेट्स टेस्ट इट। अब मुझे टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे और मुझे लेके आने हैं, और पेज लेके आने हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, इट इज माय वे ऑफ टेस्टिंग द डेटा, राइट? हम क्या करेंगे, हम डेटा को रीसेट करेंगे पूरा, ठीक है? लेट्स डू वन थिंग, टेस्ट रीसेट टेस्ट डेटा, ओके, टेस्ट डेटा वो रीसेट, होम, go to again the work items now। अब यहाँ पे कुछ पेजेस आई गेस चेंज हुए होंगे ना, यहाँ पे 9 आ गए, एंड हमने वहाँ क्या 10 रखा था, बट वी मेड इट डायनामिक। So let's do one thing, let's quickly run this part now। I haven't changed my settings, मैंने change नहीं की है settings, ठीक है? I haven't changed my settings। Let's run this part, देखते हैं क्या आता है। Okay, so due to some reason it's not clicking this button over, यही है testing जो मैं कह रहा था आप लोगों को, ठीक है? This was the only testing that was going on over here, ठीक है? It seems like it can't extract the data, right? Because see, यहाँ पे एरर आती तो ये पार्ट अंदर नहीं जा पाता, बट ये पार्ट अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग है, तो इट्स नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट सम डेटा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसने नाइन्थ में क्लिक नहीं किया है, तो आई थिंक इट हैज ओनली एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम द फर्स्ट पेज, इट इज नॉट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द other pages as well, ठीक है? And if I will be using a this type, let's use output data table, ठीक है? The data table will be out, and this part will be str data table, that is the string part, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक, this is all for the testing purpose only guys, ठीक है? Right line use करके I can use it to demonstrate like this, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा है, let's try to rerun this again। तो it is again not clicking on that item जहाँ मैंने उसको बोला था क्लिक करने के लिए, it's not clicking that item again। Completed the data, and let's see, output was only first part, right? You guys can see also uh 167 at the last over here, and this is 16, so it is not able to click on other part। Let's solve this, okay? इसको हम solve करते हैं, let's do here and extract data wizard as well again, sorry, and
Let's click over here. Yes. Extra data from multiple pages. Yes. And let's do this part now. Now अभी हम क्या करेंगे, we can use a stick selector. अब हम stick selector यूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो। इसको मैं हटा देता हूँ using this part as well। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा stick selector है। And let's see कि अब ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है इसको, you know, that part। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, we'll be using a stick selector। इसको मैं डायनामिक बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, let's see। let's try to reset the data again। ठीक है, हम एक डेटा को रीसेट कर रहे हैं। बिकॉज ये हमें क्या करना है, हमें हर टेस्ट आइटम्स के उसमें इसको रन कराना है। अगर वो नहीं होता है रन, दैट इज एन इशू। एक के लिए नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई और डेटा आ गया तो उसमें क्या होगा, दैट कैन बी एन इशू, राइट। होम वर्क आइटम्स, एंड नाउ वी हैव 14। ओके, लेट्स ट्राई टू debug it again, this file only, and let's see if the strict selector is working for us or not। okay, seems like it's working। ठीक है, ग्रेट। सो ये जरूरी नहीं है गाइस कि आपको फजी सेलेक्टर कंप्यूटर विजन ही यूज करना है। यूज वट एवर दैट इज वर्किंग विद योर प्रोजेक्ट। कस्टमाइज द एक्टिविटी, डू सम R&D। आपको हर एक्टिविटी, हर इंस्टेंस के लिए वर्क करना चाहिए, नॉट लाइक ओनली फॉर वन इंस्टेंस इज वर्किंग एंड जब नेक्स्ट इंस्टेंस की बारी आए तो इट्स फेलिंग। It shouldn't be done. Please test your workflows rigorously whenever you are in development phase or in hypercare as well। जो भी होता है please test। So it's gonna save the workflow now। Let's see। Okay, we got it। So yeah, we have already procured all the data from the all the uh, pages। Okay, the last one was 174। Let's see, 14th, uh, last one is, one second, strict selector failure। Okay, the closest selector matches are found over here as well। Okay, let's do one thing, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, क्लिक एनीवेयर, यस, yes as well, and when we will be clicking this part। ठीक है, फर्स्ट में मैं हूँगा तब मैं क्लिक करूँगा, राइट। सो आई विल हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है, and let's go to the settings part as well, and let's use a strict selector, but हम लोग उसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे फ्रॉम UI एक्सप्लोरर। ओके, and we can indicate an anchor also, guys, knowing it हम anchor भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं in terms of strict selector from the UI explorer only। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ANM 14 आ गया। लेट्स ट्राई टू चेंज इट, लेट्स ट्राई टू यूज एन asterisk for this part। So it's working good, the selector is working good। Let's save it and let's confirm this part। Save and close। Let's go again this part, because see मुझे क्या करना है, मुझे ये हर रन में चाहिए updated, right? That's why we are doing this R&D।
थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि वी आर ओनली स्टक इन वन वर्कफ्लो, बट वी आर टेस्टिंग आवर वर्कफ्लो टू बी रनिंग इन ऑल कंडीशंस, राइट? Okay, so let's go to work items again, guys. Work items, and let's go to debug file again. अब 13 है यहाँ पे. Let's see if it takes or not. Okay, so it is clicking on that. ठीक है. बिकॉज जब तक आप लोग ना R&D नहीं करेंगे अपने वर्कफ्लोज पे, यू वोंट बी टेस्टिंग वर्कफ्लोज, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक वो चीज सक्सेसफुल नहीं होगी जो आप चाह रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू डू R&D as well. And now it is saving the workflow. ठीक है, it is not moving to 12 13 12 13 like this. हमने stick selector दिया है with a dynamic anchor. ठीक है, we are doing strict selector but with a dynamic anchor. Why dynamic? Because मैंने AA name को asterisk से replace कर दिया है. Okay, so it's done. Let's see output 533. So I think that there is an issue with this. 1 second. 533, right? Okay. ओके, तो गाइज यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड फजी सेलेक्टर विद अ डायनामिक एंकर, एंड आई यूज फजी टारगेट सेलेक्टर नॉर्मल मैंने यहाँ पे यूज किया है. अब ये मेरा यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, इट इज वर्किंग ओवर हियर. एंड आप देख सकते हो ओनली वन टारगेट हैज बीन आइडेंटिफाइड. इट इज वर्किंग नाउ. ठीक है. ओके, सो लेट्स क्लोज इट. एंड यहाँ पे ये हमारा वर्कफ्लो पूरा हो गया है. ठीक है, अब मेरा एक्सट्रैक्ट भी हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू फिल्टर द डेटा टेबल. ठीक है, मैंने पहले ही बोला है गाइस, इसका जो डिस्पैचर है दैट इज सेम. सो आप देख सकते हो, यू कैन स्किप दिस वीडियो एज वेल, यू कैन डायरेक्टली गो टू द परफॉर्मर पार्ट. मैं आगे बनाऊंगा वीडियो, अभी मैंने बनाई नहीं है. ठीक है, सो वील बी यूजिंग अ फिल्टर टेबल, डेटा टेबल एक्टिविटी फिल्टर डेटा टेबल. ठीक है, और जो डेटा टेबल यहाँ पे जाएगा वो होगा IO डी dt input. राइट, दिस विल बी द डेटा टेबल. एंड यहाँ पे भी सेम होगा IO dt input. राइट, तो द थिंग इज, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे column will be of type, and the second column will be of, यहाँ पे मुझे क्या क्या लेना है, दो आइटम्स चाहिए, राइट? मुझे टाइप एंड स्टेटस. ठीक है, I'll be using type status status. Both these should be equal to, the type will be equal to wi, what, wi, we are using 3, right? And the status should be equal to open. ठीक है, हमें क्या करना है, wi3 के जो आइटम्स हैं यहाँ पे हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. wi3 इस पेज पे भी नहीं है. seems like there are less wi3 in this batch. wi3 यहाँ पे भी नहीं है. here we are. so मेरे को wi3 आइटम चाहिए, टाइप और स्टेटस शुड बी ओपन, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वी विल बी कीपिंग ओनली द टाइप ऑफ wi3 एंड स्टेटस शुड बी ओपन. ठीक है, मैं वही इनपुट यूज कर रहा हूँ डेटा टेबल, उसी में वापस फिल्टर कर रहा हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, IO इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनपुट आउटपुट इन आउट आर्गुमेंट में ऑफ अ डेटा टेबल टाइप. ठीक है, ये पार्ट मेरा हो गया है.
ठीक है जी. Now I will directly go to my framework. यहाँ पे मैं जाऊँगा to my framework and let's go to get transaction data. ठीक है. अब यहाँ पे क्या था, अगर मेरा ट्रांजेक्शन नंबर वन, इसी दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीयूजेबल वर्कफ्लो, ये तीनों रीयूजेबल बन चुके हैं मेरे पास, कहीं भी यूज कर सकता हूँ उसमें. ठीक है. अगर मेरा ट्रांजेक्शन नंबर वन है, सो इट विल बी गोइंग टू नेविगेट वर्क आइटम्स. Going to navigate work items, then it will be extracting the data table, then it will be, oh, sorry, it will be filtering the data table. ठीक है. Got it. Quickly हम इसको configure कर लेते हैं, फिर हम run करके देखेंगे. So this thing will be procured from the dictionary, config dictionary. So we'll go here again and यहाँ पे हम in argument देंगे, हम नहीं देंगे, ये पहले से ही है इसमें. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरई फ्रेमवर्क. guys, so navigate to work items URL. So I'll be going here like this, and I will be to string. Okay, ये पार्ट हो गया. एंड इस पे फिर से मुझे वही URL देना है. I have already copied it. Navigate to work items. This data table will be going to IO DT transaction data, जो कि मेरा data table है. ये तभी बनाया गया है to work it with data table. ठीक है. Got it. Extract भी हो गया है मेरा. This part has been extracted. And यहाँ पे it will be going to this part only. ठीक है. इस पे ही जाएगा and इसी से वापस आ जाएगा डेटा. ठीक है. It is really pushing data, filtering and pushing out to this part only. ठीक है. अगर मेरा नंबर वन टाइम चलता है तो फर्स्ट टाइम चलता है मेरे प्रोजेक्ट, तो इट विल बी डूइंग ऑल दिस थ्री पार्ट्स. ठीक है. इट विल बी डूइंग ऑल दिस थ्री पार्ट्स. Let's do one thing. Let's quickly go and log this out. Close this as well. हम ना यहाँ तक चला के देखते हैं that यहाँ तक कैसे चल रहा है. Save it. Okay. And let's push this part, debug with the breakpoint. Okay. In fact, we'll be closing this part as well. Let's press debug and let's see कि मेरा workflow यहाँ तक कैसा चल रहा है. ठीक है. It will be going inside that if block because मेरा transaction, sorry, मेरा project first time चल रहा है. ठीक है. It is using that reusable library. This is the beauty that हम time अपना save कर सकते हैं in a reusable library. Okay. Now I think successfully logged in. It has went to get transaction data state. Step into, obviously it will be stepping into why my transaction number is 1. ठीक है. Okay, so now it will be going to the URL. ठीक है. Navigate to work items URL. यहाँ पहुंच गया and the page is being shown to number 1. ठीक है. Okay, step into again. Step into. Step into again. Let's try to run all this workflow in one instance only, guys. अच्छा, मुझे ये डिलीट कर देने चाहिए दोनों. चलो कोई नहीं, नो वरीज, आई विल बी डिलीटिंग इट आफ्टरवर्ड्स द वर्कफ्लो. So you can see that how beautifully it is extracting all the data, and it was starting till 13 and then closing the workflow, saving the data in a variable.
Okay, step into again, and now it will be filtering the data table for us. हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, filter data table मिलेगा of type WI3 and open status only. ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो WI items that are WIF2 5 1 2 1 2, right? So we'll be getting the data filtered after this activity. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा only WI3 and the open status. This is the beauty of the filter data table activity. ठीक है, ये हमारे पास WI3 items आ गए हैं सब, राइट? लेट्स सी, इसमें से कुछ रिपीट तो नहीं हो, 808, ओके, बिकॉज या कूल। ठीक है, तो यहाँ तक इट्स डन, यहाँ तक मेरा वर्कफ्लो परफेक्टली फाइन चल रहा है। ठीक है, लेट्स गो टू गेट ट्रांजैक्शन डेटा अगेन। अब यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे डेटा मिल गया है विद द होल टेबल। यहाँ तक मुझे डेटा मिल गया है टेबल के साथ। अब मुझे ऐसा लॉजिक डिवाइस करना है कि वो डेटा से मैं एक डेटा को पिक करूँ, उसको मैं क्यू आइटम्स में ऐड करूँ, सेकंड डेटा को पिक करूँ, उसको मैं क्यू आइटम्स में ऐड करूँ। हाउ वी कैन डू इट, यू नो इट वेरी वेल, मैंने आपको पहले बताया। प्लीज रेफर माय प्रीवियस वीडियो एज वेल ऑफ डिस्पैचर एंड हाउ वी कैन यूज इट विद डेटा टेबल्स। वील यूज अनदर इफ एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो अभी 1 है इस ट्रांजेक्शन के लिए, आगे जाके वो बढ़ेगा, राइट? सो अगर मेरा ट्रांजेक्शन नंबर मेरे IO DT ट्रांजेक्शन डॉट रोज डॉट काउंट, मतलब वी आर काउंटिंग ऑल द डेटा रोज। सी, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, बिकॉज वी हैव यूज्ड काउंट। आपको समझ में आया, वी हैव यूज्ड द काउंट वेरिएबल ओवर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दैट्स व्हाई वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। अगर एक भी वेरिएबल यहाँ पे अलग डेटा टाइप का होता है, वी कांट कंपेयर देम। ठीक है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ये पार्ट आता है, मतलब वन इज लेस देन ऑल द रोज, ऑब्वियसली इट विल बी गोइंग इनसाइड बिकॉज देयर आर मेनी रोज विच आर ग्रेटर देन वन, ऑब्वियसली। ठीक है, देन वी विल बी डूइंग असाइन एक्टिविटी एंड वी कैन यूज आउट व्हाट ट्रांजैक्शन आइटम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट रो को पिक करना है। देखिए, जो भी मेरा गेट डायरेक्शन डेटा का आउटपुट होगा, मेन आउटपुट होगा, इट विल बी सेविंग इनटू आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम इज द वेरिएबल जहां मेरा प्रोसेस स्टेट पे काम होता है, इस वेरिएबल के ऊपर, इस वेरिएबल, ये वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कोई और वेरिएबल डाल दो, वहां पिक नहीं हो रहा है इन प्रोसेस, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज, अब देखो जो मेरा डेटा टेबल किस में है, इसमें सेव है पूरा, जो फिल्टर डेटा टेबल है। जो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, 1 है, आई विल बी यूजिंग -1। वाई -1, वाई, बिकॉज देखिए, जो ट्रांजेक्शन नंबर है मेरा 1 है, 1 -1 is 0, the data table index start from 0, right? And we are using data row. What we are using, we are using data row as a transaction item. जो मेरा ट्रांजेक्शन आइटम वेरिएबल, दैट इज ऑफ डेटा रो। तो अब क्या क्या होगा, अब वो क्या होगा कि अब यहाँ 1 -1 is 0, अब सेकंड रन में 2 -1 is 1, तो इट विल बी प्रोक्यूरिंग लाइक दिस। अगर मेरा डेटा टेबल फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक हाइपोथेटिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता, तो मैं यहाँ पे इंटरनेक्शन नंबर ही रखता हमेशा 1 2 3 4, पर इट इज ट्रांजेक्टिंग, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 1 इंस्टेंस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन नंबर, हमेशा -1 करना पड़ेगा मुझे। समझ में, अभी मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा, डिबग में दिखाऊंगा, वैसे हमने ये पहले डिस्कस किया है, तो आई होप आपको इतना डाउट नहीं होगा। असाइन, एंड यहाँ पे अगर इफ, अगर मेरा ट्रांजैक्शन आइटम इस ये चीज नेगेट करता है, राइट, हो गया पूरा के पूरा, रोज पूरी हो गई, फाइनल हो गई, तो आई विल बी सेटिंग इट टू नथिंग। बिकॉज व्हाई नथिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रोसेस माय ट्रांजैक्शन अहेड। ठीक है, मुझे आगे अपना ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करना है, तो आई विल बी सेविंग इट टू नथिंग। ठीक है, ये पार्ट है, दिस इज वेरी क्लियर गाइस। तो यहाँ मेरा ट्रांजैक्शन आइटम प्रोक्योर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस स्टेट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही आई विल बी ओपनिंग द प्रोसेस, नाउ मुझे क्या करना है, आई विल बी एडिंग माय स्मार्ट टू अ क्यू। ठीक है, एक्मे
taking add queue items, right? We'll be adding that specific queue item, that transaction to a queue item. Simple. So I'll be using queue. I can use add queue item, right? हम यहाँ पे add करेंगे queue item and we will be making a queue. So guys, यहाँ पे मैंने queue बना दी है with the name of research check. यहाँ मैंने नहीं बनाई है, मैंने orchestrator बनाई है, right? It is of type blank. ये blank है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. No, nothing is here. I'll even refresh it. Nothing is coming over here, right? So what our process will do, it will take one transaction item, process it in the queue, move to second item, process it in the queue again, right? So for that, let's go to item information. अब मुझे यहाँ पे queue में क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए type. Second one I need is WIID, ID, sorry, and that is third one is status. All will be of type string. ठीक है, यहाँ पे ये show हो जाएगा. तो इसको मैं कैसे procure करूँगा? So for that, I'll have to use. Okay, just 1 second. Save. What I have to do, I have to add a three arguments over here. ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे in. I can say type. I can say in underscore status, and I can say in underscore WIID. ठीक है, ये पार्ट हो गया मेरे डन. Now I will be using in type in WIID and in status, right? ठीक है, ये मेरा पार्ट हो गया and we are adding everything to that part, to this queue. Sorry, save it. ठीक है, and let's go to process state. यहाँ पे I will be calling this workflow, right? In type will be, अब यहाँ पे जो मेरा type है वो कैसे आएगा? In transaction item. Why transaction item? Because see guys, जो मेरा अब जो है transaction, that is the type of data table. ठीक है, अब data table को access कैसे कर सकता हूँ? With the help of its column name. I have told you before. Type, because वहाँ पे type है. ठीक है, and यहाँ पे sorry, dot to string, I forgot. Dot to string, let's get in transaction item. I can say status to string, and in transaction item I can say WIID to string. ठीक है, तो ये क्या करेगा? It will be adding all that part to my this workflow. ठीक है, let's try to run this. इसको हम run कर लेते हैं एक बार and let's see that ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Let's close everything. Let's run this. Okay, let's run this. So it's using a reusable workflow now. Sorry, reusable library. Okay, moving into the work items page. Oh, sorry, 1 second. I think I forgot to close one browser. That will be an extract data table. Yes, because this activity was generated by default, so that's why. Yep. See, close, never, open also, never. Save. Okay. Because see, it has opened a new instance of the browser that we don't need, right? Let's run it again. So we have to work on this similar instance, not on the new instance. That's why we are using that part as well. Okay.
Okay, I forgot to remove all those write line and output data table activity as well. I will be removing it just after the run. See, so it has moved ahead, and we can check our this part, refresh our queue. So we can see that we have 13, items. Let's see. Yeah, we have 13 number of items in our queue, and this part was showing it well. Let's see any queue item, view details, WI3, WIID, status open. Okay, this part was first in, first out. Okay, so this follows a FIFO structure, that is a first in, first out structure. Okay, you guys can see. Okay, and let's do one thing as we are talking about it. Oh, sorry. Let's do one thing. Let's use another workflow sequence. Acme logout. It's just, used to log out the application successfully, right? Because see, जब आप यहाँ पे होगे इसके बाद you need to log out from this workflow, right? ठीक है? So let's go here and automate it like this. पर यहाँ पे हमें इसको डायनामिक करना है, so इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं. We'll use some click activities. Go over there, uh, click it, log out. It will directly logging us out of the workflow. ठीक है? And then we can close the tab as well. Right, we can close the tab as well. Okay, so let's quickly test this out as well guys, because ये भी हमें करना ही है लास्ट में जाके. Continue. So didn't close the tab, I guess. Yeah, for this activity in the browser scope. Okay, that is a classic activity, right? Okay, okay, no worries, I forgot. There was a modern activity as well. uh Close application, you can say classic. Navigate browser, close tab. So this will be running, don't worry guys. Okay, so we have successfully used the dispatcher process to push all the items in our queue, and in the next video we'll be starting the performer process guys for this specific project, that is the of type this WI3. It's a complex, long, scary project, you guys can say. Okay, चलिए, thank you so much guys. If you like the channel, like the video, like the content that I'm posting on a daily basis, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much, and as always, keep learning.